Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss another important experiment of organic chemistry, and this experiment is about identification of an unknown compound, and this compound is indicated as benzamide. In the previous lecture, we have discussed about the benzoic acid, and we discover all the tests which are performed on the benzoic acid, and all the requirements we have studied. But now we are going to discuss the benzamide, and probably you are not unaware of that this acid is a benzamide. So you consider in your mind that you not know what the compound it is. So now we perform some experiment on this unknown compound and to find out what compound actually it is. So now we are going to perform some experiments on it. First, we see the physical state of this organic compound, and we see this compound has crystalline solid. In the previous lecture, I have told to you whenever we have crystalline solid like structure, we say that this compound may be a carbohydrate, may be a acid, because carbohydrates and acids and amides and phenols, they have crystalline solid like structure. Second, we note the color of this compound, and the color of this compound is white and colorless. So whenever we say a white and colorless, we say some hydrocarbons, some acids, alcohols and amides could be present, may be present. So in the benzoic acid, same these two conditions are applied. Benzoic acid is also colorless, crystalline solid. Now we discuss the order. So the order of this compound, it has no order, so it is orderless. But in the case of benzoic acid, we have discussed that the benzoic acid has pungent odor in it. So this is the differentiation between them, and due to these tests, you will identify whether it is this compound or not. Now you check the solubility. Now you dissolve 0.1 gram of this solid into the some amount of water, and then you shake it and you check, observe the solubility, whether it is soluble or not soluble in water. So we see that the benzamide is soluble in water. So due to soluble in water, we say maybe it a carbohydrate, maybe a acid could be present. While in the case of benzoic acid, we say that the benzoic acid is insoluble in the cold water, but it is soluble in the hot water. And the benzoic acid is also soluble in NaOH and the ether. So we say that some aromatic acid may be present. But here, this benzamide is soluble in water, whether it is cold, whether it is hot. This is not an option, but it is soluble. So therefore, carbohydrate, acids, phenols could be present. Now we perform another test which is called as litmus test. Litmus test is nothing, it consists of a litmus paper, and we add some drops of this compound on, we prepare the solution of this compound and drop the solution of this compound into the litmus paper, and note the color change. If the color changes from red to blue, it means it is basic, and if the color changes from blue to red, it means it is a acid. So in that way, we can identify whether the compound is acidic or basic. So what will happen, the compound soluble in water, take one drop of it and put it down on the litmus paper and note the results. No action on the color of the litmus paper. It means no color change, no color is changing, so therefore it is a neutral compound. Some compounds are neutral, and the neutral compounds have pH 7. So water also has pH 7, so it means the benzamide solution has pH 7, so therefore the litmus paper is showing no color. Okay. Now we say some alcohol, some aldehyde, amides, ketones and carbohydrate, these functional groups are also show neutral litmus paper, so therefore we are saying that they could be present in it. Now we perform another test which is ignition test. The word ignition means to burn a compound, a organic compound. So you will take 0.1 gram of this benzamide on the tip of spatula and you burn it under the Bunsen burner. Then you note the flame
the two things you will be observed. First is the smoky or the clear flame. Second is the color of flame, whether it is white or whether it's the black. So this color and the appearance of the flame tell us about whether the compound is saturated or unsaturated, or whether the compound is aromatic or aliphatic. So in the case of benzamide, the flame is smoky and the black smoke appears. Sorry, because यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लें, यहाँ ब्लैक नहीं वाइट स्मोक आएगा, मिस्टेक है यहाँ पर, इसको आप करेक्ट कर लेंगे. तो जब भी स्मोकी फ्लेम शो होगा, सो इट्स मीन you have unsaturated compound, and whenever the white color is shown, you will say some aromatic acids are present. So this is the identification. यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्मोकी फ्लेम आ रहा है, तो उसके रिजल्ट्स में क्या होगा, हमें पता लग गया है कि हमारा कंपाउंड अनसेचुरेशन की तरफ है. और आप लोगों को पता है कि बेंजामाइड के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स आते हैं. सो डबल बॉन्ड्स जो हैं वो अनसेचुरेशन का फुल इंडिकेशन शो करते हैं. और बेंजोइक एसिड में भी क्या था कि उसमें भी डबल बॉन्ड्स क्योंकि थे, तो वो भी एक अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड था. तो वहाँ पर भी हमारे पास सोखी फ्लेम और वाइट कलर का जो है वो फ्लेम आ रहा था. तो यहाँ देखते जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बेंजोइक एसिड से मिलती हैं. जस्ट एक यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस और ऑर्डर में डिफरेंस आता है कि वहाँ की ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर थी, यहाँ कोई ऑर्डर लेस है. ये बिल्कुल, वहाँ कोल्ड वाटर में ये इनसॉल्युबल था, बट यहाँ पर दोनों में ही सॉल्युबल है. और वहाँ पर जो लिटमस पेपर में जो कलर आया था ब्लू से रेड कलर की तरफ हुआ था, सो इट्स मीन कि वो एसिड था, तो इस वजह से रेड कलर अपीयर हुआ था. और इग्निटेंस टेस्ट दोनों का ही सेम है. ठीक है. अच्छा, ये एक एडिशन टेस्ट है अमाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए कि अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है. तो उसमें आप कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेट करवाएंगे. आप 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेंगे और उसको 1 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रेट करवाएंगे. तो सोल्यूशन हॉट हो जाएगा. आपने याद रखना है, जब भी कोई आप कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे तो जो है ना एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट बाहर निकलती है. इस वजह से आपका सोल्यूशन जो है हॉट हो जाएगा और वो इंडिकेट करेगा कि अमाइड जो है वो आपके इस ग्रुप के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. फिर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है. याद रखना है, उसके लिए हम लोग ये दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. पहला हम लोग उसका एक्शन का देखते हैं ब्रोमीन का इन CCl4, या हम ब्रोमीन वाटर भी यहाँ पर ना ले सकते हैं. ठीक है. या ब्रोमीन का एक्शन देखेंगे CCl4 में, या हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करेंगे. और दूसरा टेस्ट होगा बियर टेस्ट, और इसकी मदद से भी हम लोग देखेंगे कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. सो आपने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेनी है और उसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर को ऐड करना है. ब्रोमीन वाटर आप बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि आपने 5 ml ब्रोमीन ले लेना है, उसके अंदर 100 ml वाटर लेके उसको डिज़ोल्व कर लें, आपका ब्रोमीन वाटर बन गया है. अब उसी में ही आपने ये अपना जो कंपाउंड है उसको ऐड कर दोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने ऐड करना है. अब क्या होगा कि अगर कोई डीक्लोराइजेशन होती है, मतलब कोई कलर अपीयर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है. और बेयर टेस्ट की बात करें तो आपने स्मॉल अमाउंट लेनी है कंपाउंड की, चाहे वो वाटर में लें या अल्कोहल में लें. उसके अंदर आपने ये जो बेयर्स रिएजेंट है इसको आपने ऐड कर देना है. अगर आपका पर्पल कलर इज़ नॉट डिसअपेयर, आपका पर्पल कलर डिसअपेयर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपका अनसैचुरेटेड जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट है. अगर कोई भी जो सोल्यूट होगा वो इनसॉल्युबल सोल्यूट जो होगा वो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आपकी जो सोल्युबिलिटी आती है, ये एक की पॉइंट है, ये आप अपने जहन में रख लें कि अगर कोई इनसॉल्युबल सोल्यूट है जो आपके वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, तब आप ब्रोमीन इन CCl4 यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ अगर आपका सॉल्युबल है वो, तो आप ब्रोमीन वाटर यूज़ करेंगे. इस वजह से हमने यहाँ पर ब्रोमीन CCl4 नहीं, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, ब्रोमीन वाटर.
सो ये चीज़ें आपने जो है ना अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी जो भी सब्सटेंस सोल्युबल हो जाएगा उसके लिए आपने ब्रोमीन वाटर को यूज़ करना है। अगर वो सोल्युबल नहीं है तब आपने ब्रोमीन इन CCl4 के टेस्ट को यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ टेस्ट, नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजन की डिटेक्शन के लिए कुछ टेस्ट हैं। तो मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जब भी आपने डिटेक्शन करनी है किसी भी एलिमेंट की, आप सोडियम एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे और हमेशा आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना है। मतलब आपने अपना अमाउंट याद नहीं रखनी है, आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि हमेशा आपने अगर चूज़ करना है सोडियम एक्सट्रैक्ट को, सो 1 से 2 ml के बीच में ही आप इसकी वैल्यू लेंगे। इतना ही बस काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा कभी भी आपने लेना है। बिकॉज़ वाई, क्योंकि सोडियम एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, ये धमाका कर सकता है। इस वजह से आपने इसके साथ बहुत केयरफुल रहना होता है और बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी इसकी यूज़ करनी होती है ताकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन से बचा जा सके। सो इसलिए आप देखें यहाँ पर हम लोग 2 ml ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम 2 ml ले रहे हैं, हर में आपने 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो अब आप 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट हर एक्सपेरिमेंट में ले लेंगे। उसके बाद आपने नाइट्रोजन की केस में क्या करना है कि उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डाल देने हैं NaOH के, और NaOH डालने के बाद FeSO4 के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हर सोल्यूशन को हीट किया जाता है, उसके बाद उसको कूल किया जाता है या एसिडिफाई किया जाता है H2SO4 के साथ। अब पर्शियन ब्लू कलर जो है वो अपीयर हो गया है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। जब भी कोई कलर अपीयर हो जाएगा, यानी कोई भी नाइट्रोजन के लिए ख़ास तौर पे ये पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होगा, जब भी वो कोई कलर अपीयर हो जाएगा इट्स मीन कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर कोई कलर अपीयर नहीं हो रहा है इट्स मीन कि वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर हम लोग सल्फ़र का टेस्ट करें, आप सब लोगों को पता है कि बेंजामाइड के स्ट्रक्चर में कहीं भी सल्फ़र नहीं होता है जबकि नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। सो सल्फ़र के लिए हम दो ही टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट। इसमें आप वही करेंगे कि सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर, और अब आप कलर देखेंगे वायलेट या पर्पल कलर अपीयर नहीं हुआ है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा इट्स मीन कि वो एलिमेंट नहीं है, इट्स मीन कि सल्फर यहाँ पर एब्सेंट है। इसी तरह हम दूसरा टेस्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, लेड एसीटेट यूज़ करते हैं। तो 1 ml लेड एसीटेट को आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने लेड एसीटेट के साथ हमेशा ब्लैक शाइनिंग जो है वो पीपीटी फॉर्म होंगी। अब क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र नहीं है तो इस वजह से ब्लैक पीपीटी नहीं फॉर्म होगा, इट्स मीन कि सल्फ़र हमारा एब्सेंट है। सो ये चीज़ें आपने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में याद रखनी है। जब अगर मैं केस याद करूँ बेंजोइक एसिड का, तो वहाँ पर तो ना नाइट्रोजन था, ना सल्फ़र था, ना कुछ था, तो हमने कह दिया था कि कोई भी कलर अपीयर नहीं हुआ है और सारे एलिमेंट्स ये वाले एब्सेंट हैं। अच्छा, ये अब लास्ट टेस्ट है हमारा हैलोजेंस के ऊपर कि हमने देखना है कि कोई हैलोजन प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर या नहीं। तो हमने वही सोडियम एक्सट्रैक्ट को लेना है। और अच्छा, सोडियम एक्सट्रैक्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये केरोसिन ऑयल के अंदर डिज़ोल्व हुआ हुआ होता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लेंगे तो ये फ़ौरन एक्सप्लोसिव हो जाएगा। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके बिल्कुल रखते हैं और पैक करके रखते हैं। और जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपने 2 ml जो है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, तो आप किस तरह लेंगे? आप उस केरोसिन ऑयल से जब इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को निकालेंगे ना, तो आपने डायरेक्ट इसको निकाल के फ़िल्टर पेपर के ऊपर रखना है। वो इसलिए ताकि फ़िल्टर पेपर उसके ऊपर से केरोसिन ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर ले। जैसे ही वो अब्ज़ॉर्ब करेगा उसके बाद आपने फ़ौरन ही अपने सोडियम एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर जाना है, इसका रिएक्शन करवा देना है। ज़्यादा देर तक आपने इसको एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहने देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप देते जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसे कम से कम लिमिटेड टाइम में आपने फ़ौरन ही इसको यूज़ कर जाना है, किसी और रिएक्शन में इसको ले जाना है ताकि एक्सप्लोजन ना हो। अब आप क्या करोगे कि 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने लिया, उसके अंदर हेलोजेंस के केस में आपने HNO3 को यूज़ करना है। उसको बॉयल करोगे और AgNO3 ऐड करके देन आफ्टर यू कूल इट and for the halogen white ppt form. So here there is no white ppt, so therefore you will say that no halogen is going to present in it. So now we have performed all the tests for the detection of elements. Now we are going to perform some tests for the detection of
functional groups, that what the functional group is present in it. First, we will perform some tests for the amides. So amides, in first we have a hydrolysis test, and we take dissolve 4 to 5 pellets of potassium hydroxide KOH, and in the 5 to 10 drops of water, and then we add ethylene glycerol, add 8 to 10 drops of sample and heat it contact with the water bath, and check the vapors with the monitored pH paper. So pH paper turns to blue, so it's mean कि amide is present. So this is called as hydrolysis test. You will take some amount of potassium hydroxide, add water, add ethylene glycol in it, and add the organic compound into it. So mix all of these four compounds. What are these four compounds? KOH, water, second is the organic compound which is unknown to us, and the ethylene glycol. 2 to 5 and 5 to 10 drops and 8 to 10 drops of all of them, and mix them gradually, and then you will check the pH paper, which turns to blue, and which is going to indicate that the amides is going to present in it. So the second, you will boil with the sodium hydroxide solution. Boil 0.2 gram of this test tube with the sodium hydroxide. Evolution of ammonia. Here ammonia gas will be released, which confirm that the amide is present. Then the soda lime test, you will also add soda lime, and again ammonia and hydroxide evolve, which is indicating that the amides is present. Now in the last and end, you will add some confirmatory test. Boil the little substance with the dilute NaOH, and after dilute with HCl, and then cool, so the 5 ppt of benzoic acid will form. सबसे पहले आपने डाइल्यूट NaOH को डालना है, फिर डाइल्यूट HCl, पहले बेस को डालना है, फिर 5 मिनट के बाद आप डाइल्यूट HCl को डालेंगे और फिर ठंडा करेंगे, तो आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा 5 ppt में। तो ये चीज़ कंफर्म कर देगी कि आपका बेंजामाइड प्रेजेंट है। फिर आपने H2SO4 को डालना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और बेंजोइक एसिड का बनना ये इंडिकेट करेगा कि ये बेंजामाइड है। और फिर आपने ऐड करना ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनिलीन में, तब भी बेंजामाइड के क्रिस्टल्स के साथ साथ अमोनिया रिलीज़ होगी। तो इस तरह अभी हम लोग बेंजामाइड को कंफर्म कर रहे हैं। तो मेजर ये दो आप ही लोग याद रख लें कि इन दो के ज़रिए आपने इसको करना है और बेंजोइक एसिड प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। So in the last, you will going to perform the melting point apparatus. You will take the compound in the capillary tube, and then you will add up into the melting point apparatus, and you will note the melting point of that compound, and you say it melting compound is 129. In the case of benzoic, it is 121. So therefore you confirm that it is a benzamide. So this is the structure of benzamide. You see it has nitrogen in it. So in the result, you will say this is a benzamide, and you will draw the structure of this, and then you will end up your experiment. Now we move on to the pencil work of this experiment. So now in the first page, you will write up the apparatus, that what the things you will need, and second, you will reagents you required. For the solubility, you require the organic compound and the distilled water. For litmus paper, you require compound and the litmus paper. For regression test, you require some amount of organic compound and the spatula. For H2SO4, you require these compounds. For such test for the saturated and unsaturated, first test is the bromine in water, okay, not CCl4, it is in water. So you need bromine water and some organic compound. In the beer test, you also need beer reagent, water, alcohol, and the organic compound. For the detection of elements, first is the nitrogen, so you need a sodium extract, NaOH, FeSO4, and dilute H2SO4. For the sulfur, you are going to perform two tests. First is the sodium nitroperoxide, sodium extract, and the few drops of sodium nitroperoxide. For the lead acetate test, you will need a lead acetate solution and the dilute acetic acid and sodium extract. For the halogen, you need HNO3, and while the AgNO3 and some sodium extract. So for the functional group detection, you will first, for the amide test, first is the hydrolysis test. You will need KOH, 2 ml of ethylene glycol, 5 to 10 drops of water, and pH paper, and 8 to 10 drops of your sample will be needed.
For the boiling with the 30% NaOH, you will need NaOH solution and some amount of organic compound. For the soda lime test, you will need some amount of soda lime and the solution. In the last, you will perform the confirmatory test. For the confirmative test, you will need dilute NaOH, dilute HCl. These two compounds are for the first test. Then for the second test, you will need 75% concentrated H2SO4, and for the third confirmatory test, you will need aniline. And for all of these confirmatory tests, you will need the organic compound, and very little amount of organic compound, approximately zero point 0.2 grams. So this was today's experiment. I hope that you will like this video. If you have some question, then write up in the comment section. I will answer to you. I hope that you will like this video. Please subscribe my channel, and also like my videos. Please subscribe my channel, and also press the bell icon. Take care of yourself. Allah Hafiz.